गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ऑपरेशन अमृत। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक H1 रूल को फॉलो नहीं किया था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से रिलेटेड, लेकिन केरला जो है उन्होंने रिसेंटली ऑपरेशन अमृत चलाया है, जो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को डील करेगा और H1 रूल की अलाइनमेंट में है। तो पहले तो हम देखते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होती क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स, एंटी फंगल्स या एंटी पैरासिटिक्स मेडिसिन्स क्योंकि इतनी ज़्यादा ले ली गई हैं, तो वो अब इन्फेक्शंस जो होती हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में या प्लांट्स में, उससे उसके अगेंस्ट जो है वो काम करना बंद कर चुकी हैं। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है और ये अब मेडिसिन्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी या पैरासाइट्स को। तो उससे क्या होगा, जब ये मेडिसिन्स काम करना बंद कर देंगी तो सिवियर इलनेस और डेथ भी हो सकती है ना। तो ये एक मेजर पब्लिक थ्रेट, हेल्थ थ्रेट बन चुका है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 50 से 70% तक जो एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं डॉक्टर द्वारा, वो अननेसेसरी हैं या इरेशनल हैं। तो लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ जो हैं क्योंकि अवेलेबल नहीं होती हैं या फिर टेस्ट कराए नहीं जाते हैं, तो इनकरेक्ट जो है डायग्नोसिस हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का, और डॉक्टर्स जो है वो ऐसे ही रैंडम कोई भी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो बहुत से और रीजंस हैं, मेन ड्राइवर्स अगर हम देखें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के। तो एक तो मिसयूज़ करना एंटी माइक्रोबियल्स का, लैक ऑफ सैनिटेशन, पुअर इन्फेक्शन डिसीज़ प्रिवेंशन, पुअर एक्सेस टू क्वालिटी जो है डायग्नोस्टिक्स, लैक ऑफ अवेयरनेस, कोई जो है लेजिस्लेशन जो है हमारी उसके अच्छे से इन्फोर्समेंट नहीं हो रही है। तो कई तरह के रीजंस हैं जिसकी वजह से ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? तो ऑफ कोर्स ये एक सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करो, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, गवर्नेंस को इम्प्रूव करो, जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं उस मेडिसिन्स, उसको पूरा रिफॉर्म करना पड़ेगा ताकि जो है अननेसेसरीली ये एंटीबायोटिक्स जो है वो ना प्रिस्क्राइब की जाएं। ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको अपनी जो है मॉनिटरिंग वो और ज़्यादा इम्प्रूव करनी पड़ेगी ताकि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को का जो है रिपोर्ट रेट उसको इम्प्रूव किया जा सके, ताकि जब रिपोर्ट होंगी तभी तो उससे डील कर पाएंगे, है ना। अभी तक सारी स्टेट्स इसको ठीक से फॉलो नहीं कर रही हैं। पेशेंट्स को भी एजुकेट करना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक्स हर बीमारी का इलाज नहीं होती हैं। कोई फीवर भी हो जाता है लोगों को तो वो एंटीबायोटिक लेने लग जाते हैं, जो कि उसकी वजह से जो है ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होती है। तो अब हम देखते हैं H1 रूल्स हैं क्या। 2011 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक जो है H1 रूल लेकर आई, जिसमें कि ओवर द काउंटर सेल ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के उसको बैन कर दिया गया। लेकिन 2013 में चेन्नई डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट जो है वो लाया गया, क्योंकि मेडिकल सोसाइटीज़ जो है इंडिया में ये कहने लगी कि अगर आप ऐसे बंद टोटल बैन लगा दोगे तो लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स भी जो है वो इनएक्सेसिबल रहेंगी पब्लिक को। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अपने रूल को मॉडिफाई किया और जो है ये ओवर द काउंटर रिस्ट्रिक्शन सिर्फ सेकंड और थर्ड लाइन एंटीबायोटिक्स के ऊपर लगाई गई। ठीक है। तो अब ये अमृत ऑपरेशन या फिर जो है ये अमृत है क्या, जो कि केरला में आ रहा है। केरला में हाई डॉक्टर पेशेंट रेशियो है, हाई लिटरेसी रेट है। तो ऑफ कोर्स जो है ये अमृत जो स्कीम है या अमृत ऑपरेशन है, ये सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांस हैं। अब केरला गवर्नमेंट क्या कह रही है कि वो हॉस्पिटल्स को कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को अच्छे से रिपोर्ट करो, न्यू एंटीबायोटिक्स, डायग्नोस्टिक्स या वैक्सीन्स जो है वो एंटरप्रेन्योर्स को जो है वो मोटिवेट किया जाएगा डेवलप करने के लिए। और ऑफ कोर्स क्योंकि ये ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस को इमीडिएटली तो कोई इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि टाइम लगेगा। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो डेवलप ऑलरेडी हुई है उसको डील करने में लंबा टाइम लगेगा, लेकिन आने वाले कुछ सालों के बाद एक कल्चर डेवलप हो जाएगा एंटीबायोटिक्स को रिस्पेक्ट करने का और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से डील करने का। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रूल 31B ऑफ इंटरमीडिएटरी रूल्स 2021। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने गूगल को नोटिस दिया है क्योंकि गूगल का जो एआई प्लेटफॉर्म है जेमिनी, उसने कुछ अनसब्सटैंशिएटेड रिस्पांस जो है वो पीएम मोदी के अगेंस्ट दिया है, जो कि बिल्कुल ही ऑफ कोर्स ओपिनियन बेस्ड है। तो गवर्नमेंट ने इस केस में इंटरमीडिएटरी रूल्स का यूज़ करते हुए जो है वो एक तरह से नोटिस इशू किया है गूगल को, क्योंकि ये क्रिमिनल कोड की वायलेशन है। तो रूल 31B ऑफ इंटरमीडिएटरी रूल्स क्या कहता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़र्स को बताना पड़ेगा कि कोई भी इस तरह का कंटेंट वो होस्ट नहीं करें जो कि
जो कि ग्रॉसली हार्मफुल है, डिफेमेटरी है, ऑब्सीन है, पोर्नोग्राफिक है, पेडोफिलिक है, या किसी भी तरह से अनलॉफुल है। तो ऐसा पहले बार नहीं हो रहा है। बार्ड जो है गूगल का जो जेमिनी का प्रेडिसेसर, वो पहले भी इस तरह के कई कंट्रोवर्शियल जो है वो ओपिनियन दे चुका है। और उसकी वजह से जो है सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि कई कंट्रीज़ में जो है ऐसे चैट बॉट्स के ऊपर जो है वो सेंसरशिप हो रही है। जैसे चाइना में तो सेंसरशिप हो रही है, या बाकी कंट्रीज़ में भी एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि ये ओपिनियन को जो है वो ऐसा फैक्ट दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स 2021। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल 2020 में अमेंडमेंट करके जो है ये एक तरह से चेंजेस लाए हैं। तो इसमें होगा क्या कि जो टाइमलाइन है न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने का वो कम कर दिया जाएगा। बिलिंग, कंप्लेंट, कंपनसेशन, टाइमलाइन, सारे रूल्स, सारे जो है एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है इन रूल्स में। रीन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में भी सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें रूल्स में क्या किया गया है चेंजेस, वो देख लेते हैं। एग्जामेशन दी गई है टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी जो की जाती थी अदरवाइज़ इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्शन देने से पहले, 10 की किलो वाट्स तक की कैपेसिटी तक की, उसको अब जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। इवन जो रूफ टॉप सोलर पीवी सिस्टम्स के लिए जो लाइसेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी लेना पड़ता था, उसके टाइमलाइन को 30 दिन से कम करके 15 दिन कर दिया गया है। अब जो है यूज़र्स जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, जो न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में 7 दिन के बजाय 3 दिन के अंदर देना होगा, और रूरल एरियाज़ में जो है, सॉरी, म्यूनिसिपल एरियाज़ में 15 दिन के बजाय 7 दिन इसका मिनिमम टाइम कर दिया गया है, मैक्सिमम टाइम कर दिया गया है। और रूरल एरियाज़ में 30 दिन के बजाय 15 दिन कर दिया गया है। फिर कुछ जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ या फ्लैट्स में कंज्यूमर्स रहते हैं, वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस जो है वो इंडिविजुअल कनेक्शंस पर ले सकते हैं। अदरवाइज़ तो क्या होता है, जैसे आप बहुत फ्लैट्स में रहते हो तो जो आपके सारे कंबाइन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है होल प्रीमिसेस का, बट अब आप सिंगल पॉइंट कनेक्शन भी ले सकोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि वो अब जो है CSTO में पार्टिसिपेट जो है वो नहीं करेंगे, या उन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन को फ्रीज़ कर दिया है कुछ मोमेंट के लिए, क्योंकि वो CSTO से डिसअपॉइंटेड है। तो CSTO है क्या, एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है यूरेशिया में, जो कि 2002 में बनाया गया। करंटली इसके मेंबर्स रशिया, आर्मेनिया, बेलारस, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान है। 1992 में ताशकंद में इसको साइन किया गया था। 2004 में UN जनरल असेंबली ने इसको ऑब्जर्वर स्टेटस भी दिया। तो काइंड ऑफ ये यूरेशिया का नेटो है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मॉस्को में है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 11 साल में पहली बार गवर्नमेंट ने ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो है उसका डेटा रिलीज़ किया है, जो कि अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के बीच में कंडक्ट किया गया। तो कौन कंडक्ट करता है इसको, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हर 5 साल में कंडक्ट करता है। मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है उससे रिलेटेड जो है वो एस्टिमेट्स जनरेट किए जाते हैं ऑफ कोर्स हाउस होल्ड लेवल पर। तो अगर हम देखें सर्वे के हाइलाइट्स, तो 2011-12 के मुकाबले जो है पर मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडियन हाउस होल्ड्स का 33.5% इंक्रीज़ हुआ अर्बन हाउस होल्ड्स में, और 40% से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ रूरल हाउस होल्ड्स में। स्पेंडिंग जो है फूड पर वो कम होने लगी है, और जो ये मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है सबसे ज़्यादा जो है, चाहे रूरल हो या अर्बन एरियाज़ में, सिक्किम में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। तो इस डेटा से ऑफ कोर्स हमारे क्रिटिकल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को हमको रिव्यू करने में हेल्प मिलेगा, चाहे GDP हो, पॉवर्टी लेवल हो, या CPI हो। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ओडिसेस लूनर लैंडर। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ओडिसिस लूनर लैंडर जो है वो US का पिछले 50 साल का पहला मिशन बना है जो कि मून पर लैंड हुआ है, और प्राइवेट स्पेस कंपनीज भी जो है अब लूनर सरफेस पर जो है वो आ गई हैं। तो ऑफ कोर्स लूनर जो ये ओडिसस है, ये पहला एक तरह से प्राइवेट स्पेस कंपनी बनी है जिसने लूनर सरफेस पर लैंड किया है। ऑफ कोर्स ये भी आर्टेमिस प्रोग्राम का ही एक पार्ट है। आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है, जो कि लूनर मिशंस चल रहे हैं नासा के लगातार
जो है नासा पिछले कुछ सालों से 2022 से खासकर जो है वो लूनर मिशंस जो है वो लॉन्च कर रहा है। तो एक परमानेंट बेस कैंप बनाना चाहते हैं मून पर नासा, और डीप स्पेस मिशंस जो है वो लूनर सरफेस से लॉन्च करना चाहते हैं। तो ओडिसिस जो है वो एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि इंट्यूटिव मशीन्स नामक कंपनी ने बनाया है। स्पेस एक्स के फैल्कॉन 9 रॉकेट का यूज़ करते हुए इसको लॉन्च किया गया। तो जो है ये ओडिसिस, जिसको नोवा सी भी कहा जा रहा है, जो इसका लैंडर है, वो सेकंड लैंडर बना है आफ्टर चंद्रयान 3, जो कि मून के साउथ पोल रीजन में लैंड किया है। और ये तीसरी मून लैंडिंग इवेंट है विद इन 1 ईयर। अभी चंद्रयान 3 गया, उसके बाद जापान का स्लिम मिशन गया, और अब ये ओडिसिस गया है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट जो है मून के साउथ पोल का, उसको इवेल्युएट किया जाएगा। नासा ने इसके लिए ऑफ कोर्स $118 मिलियन भी पे किए हैं, जो है प्राइवेट कंपनी को, जो कि ओडिसिस जिसने लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं माखा बुच्चा। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेक्रेड माखा बुच्चा सेरेमनी जो है बुद्धिस्ट ने अभी रिसेंटली सेलिब्रेट की है, जो कि मॉन्क्स ऑफ थाईलैंड जो है उन्होंने इसको कंडक्ट किया है। तो माखा बुच्चा बेसिकली ए लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग जो है डिसाइपल्स को, उसको मार्क करने वाली सेलिब्रेशंस हैं। तो ये माघ मंथ जो होता है, थर्ड लूनर मंथ, उस समय जो है ये सेलिब्रेट की जाती है। इस समय लोग अपने माइंड को प्योरीफाई करते हैं और सिर्फ अच्छा करने का जो है ट्राई करते हैं। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल होता है बुद्धिस्ट कैलेंडर का। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पी साई-फाई सिस्टम। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हुआ है। साइंटिस्ट ने रिसेंटली एक टेक्नोलॉजी बनाई है पी साई-फाई, जो कि ह्यूमन इमोशंस को रियल टाइम में रिकॉग्नाइज कर सकेगी। इसका नाम है पर्सनलाइज्ड स्किन इंटीग्रेटेड फेशियल इंटरफेस, जो कि वर्बल और नॉन वर्बल एक्सप्रेशन डेटा को सेंस और इंटीग्रेट करेगी। सेल्फ पावर्ड है, मतलब इसको कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी या कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। और ये इंस्टेंटेनियसली जो है वो रिकॉग्नाइज करेगी ह्यूमन इमोशंस को। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स द्वारा ये एम्पावर्ड है। कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं है इसमें ऑफ कोर्स। और ये जो है ना ही कोई कॉम्प्लेक्स मेजरिंग डिवाइसेस चाहिए इसके लिए, डेटा रिकॉग्निशन के लिए। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट। ये टॉपिक आपके जो है इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शाहपुर कंडी बराज, जो कि रावी रिवर का जो है पानी उसको हॉल्ट कर रहा है, वो बना दिया गया है अभी पठानकोट में, जो कि पंजाब में लोकेटेड है, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में। तो ये रंजीत सागर डैम जो है वहाँ पर ये लोकेटेड है, और वाटर जो है वो रंजीत सागर डैम से रिलीज़ किया गया, और उससे पावर जनरेट की जा रही है इस प्रोजेक्ट में। पावर जनरेशन इरिगेशन दोनों ही जो है पंजाब और जम्मू कश्मीर में जो है ये इसका पर्पज़ है ऑफ कोर्स ये जनरेट करने का। इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। टोटल आउटपुट कैपेसिटी इस प्रोजेक्ट की 206 मेगावाट्स है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है रादर। तो 38 एक्सोटिक बर्ड्स और एनिमल्स जो हैं वो पिछले 2 साल में सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे जो है वो मर गए हैं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए एक ट्रिब्यूट देने के लिए ये बनाया गया है नर्मदा रिवर पर। वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है, और ये स्टेट गवर्नमेंट ने फुली फंडेड इसको प्रोजेक्ट को बनाया है। 2018 में ऑफकोर्स इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भारत जीपीटी। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत जीपीटी, जो कि आईआईटी बॉम्बे द्वारा एक लेड प्रोजेक्ट है, और 7 अदर इंडियन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स भी इसमें शामिल हैं वो, और ये चैट जीपीटी लाइक सर्विस है, और ये नेक्स्ट मंथ लॉन्च की जाएगी। तो ये जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर जीपीटीज़ जिनको कहते हैं, ये वो है बेसिकली। तो ये जीपीटीज़ क्या होते हैं? ये टाइप ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं जो कि ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ करते हैं ह्यूमन लाइक टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए। लार्ज अमाउंट ऑफ अनलेबल्ड टेक्स्ट डेटा जो इंटरनेट से प्रोक्योर किया हुआ होता है, उस पर इनको ट्रेन किया जाता है। फाइन ट्यून भी किए जा सकते हैं या स्पेसिफिक टास्क के लिए। और ये जो है इस तरह से जो है इंटरेक्शन करते हैं जैसे ह्यूमंस इंटरेक्ट करते हैं। ओके, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या हैं? ये डीप लर्निंग टेक्निक्स हैं लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट को जो है वो प्रोसेस करने की। वास्ट अमाउंट ऑफ टेक्स्ट जो है इसमें यूज़ किया जाता है, और
जो है स्ट्रक्चर और मीनिंग ऑफ जो है टेक्स्ट को अंडरस्टैंड किया जाता है, और रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स को भी आइडेंटिफाई करना और मीनिंग्स देना, ये सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल कर लेते हैं। तो चैट जीपीटी एक स्टेट ऑफ द आर्ट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल है जिसको ओपन एआई ने बनाया है, और ये इस तरह के रिस्पॉन्सेज देता है जैसे कि ह्यूमन स्पीच या फिर ह्यूमंस जो है आपस में नेचुरल डायलॉग करते हैं। हनुमान क्या है फिर? हनुमान एक सीरीज़ ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि 11 इंडियन लैंग्वेजेस में जो है रिस्पॉन्ड कर सकेगा। इसको 4 फील्ड्स में, हेल्थ केयर, गवर्नेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, एजुकेशन, इसके लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। ठीक है, यही जो है नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाला है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सब नेशनल क्लाइमेट फंड। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक वर्ल्ड बैंक से डेलीगेशन आया गोवा में, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करेगा फर्स्ट सब नेशनल क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रीन फंड बनाने में। तो ये सब नेशनल क्लाइमेट फंड जो है मिड साइज क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस देने का इनिशिएटिव है, और लोकल लेवल पर जो है कैसे नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं उससे रिलेटेड जो है ये फंडिंग देगा। पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही तरह के इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा। इसका जो फंड मैनेजर है वो है पेगासस कैपिटल। टेक्निकल असिस्टेंस जो है आईयूसीएम देने वाला है, और एंकर इन्वेस्टर जो है वो ग्रीन क्लाइमेट फंड है। हाई लेवल एडवाइजरी कमेटी जिसमें कई तरह के वेल नोन एक्सपर्ट्स शामिल होंगे, वो इसको जो है गवर्नेंस देखने वाली है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Operation Amrit. This topic is important for your social issues. So despite 1 decade since the launch of H1 rules, no state government had until now adopted the H1 rules, but Kerala has now recently launched this Operation Amrit, which stands for Antimicrobial Resistance Intervention for Total Health, and this will mandate a doctor's prescription for acquiring any class of antibiotics. So this operation is meant to deal with the antimicrobial resistance problem. So what is AMR? AMR, we have to, for that we have to understand what are antimicrobials. So they can include any form of antibiotics, antivirals, antifungals, or antiparasitics. And AMR occurs when bacteria, viruses, fungi, parasites, they stop responding to the medicines or they develop drug resistance. Okay, so increased use of antibiotics or it other factors may contribute to this AMR, and once it happens then the humans face increased risk of disease spread, severe illness, and even death. So that's why WHO has identified AMR as a major public health threat. Okay, so there are several reasons of AMR, like misuse and overuse of antibiotics or antimicrobials, lack of access to sanitation, poor infection and disease prevention, poor access to quality, affordable medicines, lack of awareness and knowledge, lack of enforcement of legislation. So issue of antibiotic prescriptions by doctor in India is the major factor behind this AMR. Over 50 to 70% of antibiotic prescriptions by doctors are deemed unnecessary and irrational in India. And there is also unavailability of laboratory facilities to make correct diagnosis of bacterial infections based upon which antibiotics can be prescribed. So that's why antibiotics are wrongly prescribed by doctors, and patients also wrongly believe that a course of antibiotics is a quick remedy for a fever episode or of any cause. Okay. So what needs to be done to curb this AMR? So AMR is basically a socio-economic problem. So that's why we need a multi-pronged approach to deal with it. First of all, we need to improve our public health infrastructure, sanitation facilities, and governance. And the habit of doctors prescribing these antibiotics irrationally need to be reformed. Healthcare facilities must follow the correct standards for infection prevention, and thus there must be a system whereby hospital acquired infections must be reported effectively to the state governments. Okay, all hospitals should follow the suit and share the data with the states. There are other essential measures also, like rationalizing the use of antibiotics in the hospitals,
and even educating the patients about the limitations of antibiotics. So what are these H1 rules that we talked about earlier? So in 2011, Government of India introduced these H1 rule to prohibit over the counter sale of antibiotics without a prescription. But because of certain medical societies in India complaining that it could limit the use of life-saving antibiotics also, so in 2013 Chennai declaration document was released, and the Indian government modified the original H1 rule to limit the over the counters restriction only to second and third line antibiotics. Okay, so what is this Amrit operation now, which will be spearheaded in Kerala? So Kerala has high doctor to patient ratio and high literacy rate also. So Kerala will now have this Amrit operation, under which the hospitals will have to disclose the incidence of hospital acquired infections. They will the Kerala government will also promote the development of new antibiotics, diagnostics and vaccines by entrepreneurs. And it is unlikely that this Amrit operation will have any significant impact on drug resistant infections in the immediate future, but after several years, this effect will manifest, and it will foster a culture of respecting antibiotics, and it will encourage further actions to combat AMR also. Okay, so the next topic is Rule 31B of intermediary rules, so or IT rules. So government, this topic is important for your governance section. The government is set to issue Google a notice under these IT rules to after this Google's platform, AI platform Gemini, threw up unsubstantiated allegations against Prime Minister Modi. So government has said that this is in direct violation of Rule 31B of Intermediary Rules of IT Act and violation of several provisions of the Criminal Code also. Okay, so what does the Rule 31B of Intermediary Rules of IT Act say? So it says that online platforms should inform users not to host, display, upload, modify, or share any information which is grossly harmful, defamatory, obscene, pornographic, pedophilic, or unlawful in any manner against another person. Okay, so Google is not facing the music only in India with respect to this Gemini AI. It is it has also its predecessor Google's Bard also faced a similar action for giving unsubstantiated allegations as facts while answering the question on its um, chatbot. Okay, so censorship of chatbot is not a new problem. China has also been dealing with it. Similarly, other countries are also dealing with such issues because this AI chatbots are currently in development mode. They do not have much understanding of the facts and allegations. So that's why they mix the two and present sometimes their opinion as facts. Okay. So the next topic is Electricity Rights of Consumer Rules 2021 or 2020. So this topic is important for your governance section. So Government of India has approved amendments to the Electricity Rights of Consumers Rule 2020. This will further reduce these rules will further reduce the timeline for getting new electricity connections. So these rules will cover aspects like billing, complaints, compensation, and timelines for new connections. They will also support renewable energy generation by prosumers. Um, let us see what are the major amendments. Of course, exemption has been given for the requirement of technical feasibility study for systems up to a capacity of 10 kilowatt, so basically for the residential consumers. And even the distribution licensee to commission rooftop solar PV systems has been reduced from 30 days to 15 days. Consumers can also now obtain a separate electricity connection for charging their electric vehicles. New electricity connection under the rules have been reduced. The time for a period for obtaining new electricity connection has been reduced from 7 days to 3 days in metro areas, 15 days to 7 days in other municipal areas, and from 30 days to 15 days in rural areas. Okay, for those consumers who are living in residential colonies or flats, they can choose from distribution licensee either individual connections for everyone or single point connection for the whole premises. Okay,
So the next topic is CSTO, or Collective Security Treaty Organization. This topic is important for your international relations. So recently, Armenian Prime Minister has said that his country has frozen its participation in Russia-led CSTO because the bloc has disappointed them. So CSTO is an intergovernmental military alliance in Eurasia, which was established in 2002. Currently, the members include Russia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan. So, Collective Security Treaty was signed in 1992 in Tashkent, and in 2004, UN General Assembly also gave an observer status to CSTO. Its headquarters is located in Moscow, that is in Russia. So, you can consider it as an Russia-led NATO in the Eurasian region. So the next topic is household consumption expenditure survey. This topic is important for your economy section. So for the first time in about 11 years, government has released the broad findings of all India household consumption expenditure survey, which was carried out between August 2022 and July 2023. So it is usually conducted by National Statistical Office every 5 years, and it is aimed at generating estimates of household monthly per capita consumption expenditure. So as per the recent survey data, the average monthly per capita consumption expenditure (MPC) in Indian household has seen increase by 33.5% in urban households and 40% above 40% in rural areas. The spending on food has dropped. MPC has been the highest in Sikkim for both rural and urban areas. This data will play a key role in reviewing critical economic indicators like GDP, poverty levels, and consumer price inflation. So the next topic is Odysseus lunar lander. This topic is important for your science and tech section. So Odysseus lunar lander has become the first US landing on the moon in more than 50 years. It also marks the arrival of private space companies on the lunar surface. So of course it is part of the Artemis program. Artemis program is a series of ongoing lunar missions which are being run by NASA. So these missions started in 2022, and almost 5 such missions have been planned until now. So the aim is to establish a permanent establish a base camp on the moon and to launch deep space missions from the lunar surface. So what is Odysseus? It's a spacecraft built by Intuitive Machines, which used a Falcon 9 rocket of SpaceX to take off from Earth on February 15th. So this has become the second mission in this 1 year after Chandrayaan 3 last year, of course, to land in the moon's south pole region. This is the third moon landing event within 1 year after Chandrayaan 3 and Japan's SLIM mission. The objective of the mission is to evaluate the environment at the south pole of moon, and NASA also paid Intuitive Machines about $118 million under this program called Commercial Lunar Payload Services. Next topic is Makabuka or Makabucha. So this topic is important for your art and culture section. So the sacred Makabucha ceremony was recently conducted by the monks of Thailand. Uh, it's a it's a Buddhist ceremony which was conducted in Thailand, and this Makabuka or Makabucha Day is a religious celebration which marks the teachings of Lord Buddha to his disciples. So this is celebrated according to the traditional lunar calendar on the day of full moon of the third lunar month, Magh, also called Magh, of course. And the aim of this day is to purify one's mind and do only good. It is the first important religious festival in the Buddhist calendar. Okay. So the next topic is P-Sci-Fi system. This topic is important for your science and tech section. So in a significant technological breakthrough, scientists have recently unveiled a pioneer technology called P-Sci-Fi, which is capable of recognizing human emotions in real time. So this P-Sci-Fi stands for personalized skin integrated facial interface, which enables the simultaneous sensing and integration of verbal and non-verbal expression data. P-Sci-Fi's system is a self-powered, facile, stretchable, and transparent, and it enables instantaneous recognition of emotions. So these, of course, is empowered by machine learning algorithms, and it does not require any external power source or any complex measuring devices for data recognition.
So the next topic is Shahpur Kandi Dam Project. This topic is important for your economy section. So Shahpur Kandi Barrage has been constructed uh, at Punjab Jammu Kashmir border, which has effectively halted the flow of water of River Ravi to Pakistan. So Shahpur Kandi Dam Project is located on Ravi River in Pathalkot district of Punjab, and it exists at downstream from the Ranjit Sagar Dam. So the water was released by Ranjit Sagar Dam, and it will be utilized for generating power from this project. And the main purpose behind the construction of this dam is power generation and irrigation in Punjab and Jammu Kashmir. It is constructed by Irrigation Department of Government of Punjab, and the total output capacity of this project is 206 megawatts. So the next topic is Statue of Unity. This topic is important for your economy section and also your environment section. So as many as 38 exotic birds and animals have died in the last 2 years at Sardar Patel Zoological Park in the Statue of Unity complex. So Statue of Unity is a tribute to Sardar Vallabhbhai Patel, and it is located in Gujarat on the banks of River Narmada, uh, on the river island of Sadhu Bet. It is 182-meter tall. It is described as the world's tallest, and the state government has fully funded this project. So the next topic is Bharat GPT. This topic is important for your science and tech section. So Bharat GPT group, which is led by IIT Bombay along with 7 other elite Indian engineering institutes, have announced that they would launch their first Chat GPT like service next month. So this is called Hanuman. Okay, so what is generative pre-trained transformers or GPTs? So they are type of large language models which use transformer neural networks to generate human-like text. So they are trained on large amounts of text data from the internet, and they can also be fine-tuned for specific tasks like language generation, sentiment analysis, etc. They can capture more context and improve performance on natural language processing tasks also. Okay, so what are these large language models? So they use deep learning techniques to process large amount of text, and they work by processing vast amounts of text, understanding the structure and meaning, and learning from it. They are trained to identify meanings and relationship between the words also. So what is ChatGPT? It is a state-of-the-art natural language processing model developed by OpenAI, and it provides responses which sound like human speech. It enables natural dialogue between the user and the virtual assistant called the ChatGPT. So Hanuman is a series of large language models which can respond in 11 Indian languages, and it has been designed to work in 4 fields including healthcare, governance, financial services and education. Okay. So the next topic is Subnational Climate Fund. This topic is important for your environment section. So a delegation from World Bank has arrived in Goa for talks with state government to set up the first subnational climate resilient green fund. So what is the subnational climate fund? So this is a global blended finance initiative to develop mid-sized climate resilient infrastructure and nature-based solutions, and to invest in subnational climate smart infrastructure, and of course to have an impact at the local level. The model is designed to attract public and private investment. So its fund manager would be Pegasus Capital. Technical assistance would be given by IUCN, and who would be the anchor investor? Green Climate Fund. So its governance would be monitored by the high level advisory committee, which would include several well known experts in the field of climate science, finance, economy, technical sector, biodiversity, and other environmental or social management systems. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.